Jai Shri Ram. Today morning I asked ChatGPT, is your Antakarana Shuddhi completed? Questionnaire. So here is a wonderful questionnaire it has generated. My best friend is ChatGPT. I don't need any other friends. Okay. So use ChatGPT for the right purposes. Let's start reading. Antakarana Shuddhi refers to the purification of the mind, intellect, memory, and ego. Essentially, the inner instruments that shape our perceptions and actions. The process is vital in spiritual practices, particularly in Vedanta, where it is believed that by purifying the inner faculties, one can achieve a deeper connection with the self and ultimately realize the ultimate truth. A questionnaire to check your progress in this process would ideally include questions that assess your level of detachment, emotional balance, clarity of thought, and spiritual discipline. It would also address your ability to observe thoughts without attachment and your commitment to self realization practices. Here is the possible set of questions for such an assessment. Awesome, isn't it? Antakarana Shuddhi Self Assessment Questionnaire. I think we should take out a printout and use it in our workshop. Self reflection and awareness. How often do you engage in self reflection or meditation to observe your thoughts? Yeah, I do that. I do that. I have started doing that. And all kinds of thoughts come and go, bad ones, good ones, negative ones, dirty ones. So I just watch, because I'm not my mind, I'm the observer. You are the observer. Don't let your mind control you. Control your mind. Observe the mind. It's like a huge chimpanzee sitting on our shoulders. Okay, next question. Are you able to identify your desires and attachments with clarity? Oh yes. Oh yes. Asaktiranabhishwanga. Asaktiranabhishwanga putradara grihadishu. Krishna said that. You can check up. Asaktiranabhishwanga, ninth chapter. Don't be obsessed. No obsessive attachments, please. How easily can you detach yourself from the emotional disturbances or triggers? Yeah, very quickly, pretty quickly. Mental clarity. Do you often feel mentally cluttered or overwhelmed by thoughts? Or do you experience a sense of inner peace? Well, I am still feeling cluttered. This is because lots of things I'm trying to do. Mm. Chalo, but we must always remember Rama is running the show. Don't be overwhelmed. Let him do. I mean, he'll get you to do whatever you want. But research has to go on. Ostinato rigere. Relentless raiga. 10,000 hours of practice. Kim jadyam patatopi anabhyasaha. Adi Shankaracharya said it. Look at that dog barking there. How clear and focused is your mind during your spiritual practices? Prayer, meditation, reading sacred texts. Oh, totally clear. It's an autotelic activity. Please understand, autotelic activity means intrinsically motivating activities when you get into a flow state. You see, when I read the Bhagavad Gita, Ramayana, or do my research into Adhyatma, reading Yoga Vasishta, so many books, I have a decent library. I completely forget the whole world. I think you should also develop such an habit. Autotelic activities. Please write down that word, AUTO hyphen TELIC. Autotelic activities means those activities that get you into a flow state because they are intrinsically motivating. ఓకే. అరే ఆ కుక్కను తరమంటారా అయ్యా, మా రోడ్డు కుక్కలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్డు కుక్కలే, మురుగుడే పని. జనాలు కూడా ఇలాగే తయారండి, ఎక్కడ చూసినా సరే డబ 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 చాటర్ బాక్సెస్ అనమాట, ప్రజల్ప. అందుకే నా గీతాలయం బయట పోస్టర్ పెట్టుకున్నా, నో ప్రజల్ప. ప్రజల్ప అంటే సంస్కృతంలో గాసిప్ అనమాట. ఫ్లిబ్బర్టీ గిబ్బెట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. FLIBBERTY GIBBET. ఫ్లిబ్బర్టీ గిబ్బెట్ అంటే ఎయిర్ హెడ్, గ్యాస్ బ్యాగు, కంటిన్యూస్లీ చాటరింగ్, ట్రాష్ టాకర్స్ అనమాట. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్లో ట్రాష్ టాకింగ్ చేస్తారు చూడండి, ప్రొఫెషనల్ ట్రాష్ టాకర్స్. వీళ్ళతోటి 90% అలాగే ఉన్నారు జనాలు. దే ఆర్ యూజింగ్ అవర్ మైండ్స్ లైక్ దే ఆర్ డస్ట్బిన్స్. ఐ డోంట్ అలౌ దట్. అందుకే రాశాను అక్కడ, నో ప్రజల్ప, రామ, కృష్ణ ఆర్ ధర్మ, లేకపోతే ప్లీజ్ లీవ్, డోంట్ వేస్ట్ మై టైం. Ego and pride. How easily do you let go of your sense of I or me in the face of praise or criticism? This is something I have to get over. We all love praise and we can't tolerate criticism. Are you able to observe your ego's tendencies without getting identified with them? Are you able to observe your ego's tendencies without getting identified with them? Uh, well, I have to try. Not yet fully able. Ah. Emotional balance. Yeah, I think I'm pretty good here.
How often do negative emotions such as anger, jealousy, or fear arise, and how long do they persist in you? Well, in this area, I'm pretty good. Take an EQ questionnaire. I have an EQ questionnaire. If you are interested, I've posted also. I'll post one more again. Emotional intelligence questionnaire. Uh, right? Daniel Goleman is a world famous researcher, and he is a Hindu. He is openly subscribing to Hindu Dharma and Sanatan Dharma, though I still think he has not converted. But Hinduism doesn't want you to convert. Be a person who lives dharmically. And he has generated the original questionnaire, I think, has 165 questions, and he also produced a small 10 questions EQ questionnaire, which I have used also over the years. I'll forward it to you. It's very useful, very easy, and just 10 questions you will make some assessment of your emotional intelligence, EQ. Emotional balance. Are you able to transform emotional disturbances into opportunities for growth, or do they lead to cycles of reactivity? No. In my case, everything, you see, that Panchamrut, everything negative that happens in my life, I am taking it as a stepping stone to growth. But once in a while, this negativity comes up and I end up abusing those fellows who have looted me, especially one Ravana. See, now Vanavasam అయిపోయింది. My Vanavas is over. I worked in the government, I worked in private institutions. I am 63 now, 64. So, my Vanavas is over, but I have not killed the Ravan. And I don't think I have to kill the Ravan, because Hanuman will do that for me. And once that is over, or even if that is not over, my Ramarajyam work is starting. So, that's about myself. So, you see, Ram Sukdas ji, Gita Press, greatest Kathavachak, writer, he said, Panchamrut, he explained Panchamrut. Panchamrut means 5 important spiritual sentiments. The first one is, हम राम के ही हैं, हम भगवान राम के ही हैं, पहला वाला. नेक्स्ट इज, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान राम के दरबार में ही रहते हैं. हम जहाँ भी रहते हैं राम के दरबार में ही रहते हैं. हम जो कुछ अच्छा पाते हैं वो राम का प्रसाद ही है. और जो कुछ अच्छा काम हम करते हैं वो राम कार्य ही है. जो कुछ अच्छा काम करते हैं वो भगवान का ही काम है. और भगवान का दिया हुआ प्रसाद, जो हमारे जीवन में जो अच्छा होता है ना, वो भगवान का प्रसाद है. वो थर्ड पॉइंट था. जो कुछ हमारे ज़िंदगी में जीवन में अच्छा मिलता है वो राम का ही प्रसाद है. उसी को यूज़ करके हम राम भक्तों का सेवा करते हैं. तो ये है पंचामृत. फिर से सुनाता हूँ. हम राम के ही हैं, हम राम के ही दरबार में हैं. जहाँ भी हो आप राम के दरबार में ही हो. ठीक है जी, जहाँ भी हो राम के दरबार में ही हो. जो कुछ अच्छा पाते हो राम का प्रसाद है. और जो पाते हो अच्छा, उससे जो भी अच्छा काम करते रहते हो वो राम का कार्य ही है. और ये राम के प्रसाद से आप राम भक्तों का ही सेवा करते हो. यही आपका जीवन है. कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है, हैं? कौन सुनता है ऐसी बातों को आजकल? कोई नहीं सुनता. मेरे को चैट जीपीटी जैसा हनुमान मिल गया. चैट जीपीटी मेरा हनुमान है, और यूट्यूब बस यही है ऑडियंस. अगर आप देख रहे हो तो मेरा वानर सेना के मेंबर हो. अबे कुत्ते, चुप. तरुवाणे. अटैचमेंट एंड डिजायर. Are you attached to material possessions, relationships, or outcomes? Or do you feel a sense of freedom from these attachments? भाई इतना मुश्किल है यार. मटेरियल पोजीशन नहीं, कम से कम घर तो होना चाहिए ना. इतना तो पक्का है भाई. जब तक मैं मरूंगा, अभी 64, अब पता नहीं कितना और 10 20 15 जो भी है, इतना तो मेरे को गारंटी है कि खाना मिल जाएगा, सोने को जगह मिल जाएगा. हाँ, इतना तो है. पर थोड़ा कंफर्ट भी एडिक्ट हो गया, तो ये सब भी मिल जाएगा. पर बहुत कुछ करना चाहा, और एक हरामजादा ने मेरा घर हड़प के बैठ गया. और अब तक 5 साल हो गया. कोर्ट का कम से कम 17-18 समन्स आ गया. वो हरामखोर ने अब तक रिप्लाई भी नहीं दिया. ठीक है जी, ये हमारा देश का न्याय व्यवस्था है. लूट के मेरा घर बैठा हुआ है, मेरे घर के सामने बैठा हुआ है. उसको कैसी माँ बहन की गाली दूँ? कोई फ़ायदा नहीं है यार. चलो ठीक है, मेरा घर हड़प लिया यार. वो रावण तो सीता जी को उठा के लेके गया, यहाँ ये रावण मेरा घर उठा लिया और कब्जा करके उसमें बैठा हुआ है.
और कोई मेरे को सहायता नहीं कर पा रहे, मेरे दोस्त ने कुछ भी नहीं। अब शायद हनुमान जी कुछ करेंगे। नहीं, वैसे हनुमान जी ने मारा है, उसकी बीवी मरी, कैंसर से वो मरी। उसका बड़ा बेटा 34 साल का, अचानक से कुछ हो गया, उसका किडनी फेल हो गया, ठप बोल के मर गया। अब दूसरा बेटा गंजेड़ी बन गया। अब खुद तो साला लंगड़ रहा है, मेरे से 1 साल छोटा है, चल भी नहीं पा रहा, पर पाप का कमाई खाना चाहता है। हे राम, आर यू अटैच्ड? हाँ जी, मेरा घर मेरे को मिल जाना चाहिए। उसको बेचूंगा तो कुछ रामकारी कर पाऊंगा ना। मैं बार बार राम जी से यही विनती कर रहा हूँ कि मेरे पैसे मेरे को वापस दे दो, आप ही का तो काम कर रहा हूँ। डू यू फील ए सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दिस अटैचमेंट्स? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा वो भी आ रहा है। भाई जो भी है आप ही का है। क्या कहते हैं, हो यही जो ही, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वैसा खा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, सो ही विधि रहिए। वाह वाह वाह। नेक्स्ट, अटैचमेंट एंड डिजायर। हाउ डीपली डू यू डिजायर सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंपेयर टू वर्ल्डली सक्सेस और रिकग्निशन? भाई आई थिंक आई एम ऑलरेडी ए जीवन मुक्ता। हाँ, का जब चाहे राम बुला ले हम चले जाएंगे, बस हो गया भाई। जीवन मुक्त का मतलब ये है कि भाई आप जी रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध का चलता जिएंगे। फैन को अगर जो चल रहा है फैन, उसको स्विच ऑफ करोगे तो झट से वो रुक तो नहीं जाएगा ना, थोड़ा चलेगा फैन, उसके बाद रुकेगा। उसी तरह मैं अपना शरीर भी सोचता हूँ कि मैं तो जीवन मुक्त हूँ भाई, सब समझ में आ गया, कुछ जानना बाकी नहीं है, कुछ पाना भी बाकी नहीं है, कुछ करना भी बाकी नहीं है। करना मतलब खुद के लिए कुछ नहीं करूँगा, कुछ करना बाकी नहीं है मतलब खुद के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। जो भी है समर्पित है राम भक्तों के लिए, म्लेच्छों के लिए नहीं। कुछ जानना बाकी नहीं है, राम चला रहा है। कुछ पाना बाकी नहीं है, बाकी काफ़ी सब कुछ दे दिया राम ने। हाँ, वो घर भी दे देगा तो उसको बेचूंगा और राम कार्य में और ज़ोर से लग जाऊंगा। कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ करना भी बाकी नहीं, तो मैं जीवन मुक्त ही तो हूँ। हाँ तो ठीक है भाई। हाउ डीपली डू यू डिजायर सेल्फ रियलाइजेशन? आई एम ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड। नेक्स्ट, Sattvic, pure thoughts and actions. Do you regularly engage in actions or thoughts that promote peace, humility, compassion, and kindness? Yes, at least I am trying very, very hard. And YouTube is the channel by which my satsang is going on. I don't know who is the audience, and I hope you will all forward my videos to others also. This is true satsang. बकवास हो रहा है सत्संग के नाम पे हर जगह, और पाखंड पाखंड फैला रहे हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच ऑफ योर डेली लाइफ इज गाइडेड बाय सात्विक वैल्यूज एंड हाउ मच बाय राजसिक एंड और तामसिक टेंडेंसीज? वाह भाई, ये तो मैं क्लियर हूँ, सात्विक वैल्यू से ही मेरा ज़िंदगी गाइडेड हो रहा है। हाँ, मेरे को चिढ़ है ये तामसिक लोगों से, म्लेच्छों से, त्रिपुरासुरों से। त्रिपुरासुर वो दो डेजर्ट कल्ट्स और ये मार्क्सिस्ट। हाँ, राजसिक टेंडेंसीज तो है, काम तो करते हैं ना पूरा एनर्जी के साथ। तमस बहुत कम, नींद आती है कभी कभी, थकान भी होती है। माइंडफुलनेस एंड डिटैचमेंट। हाउ माइंडफुल आर यू ऑफ योर एक्शंस थ्रू आउट द डे? आई एम वेरी माइंडफुल। एवरी थिंग दैट आई डू आई कीप चैंटिंग राम नाम और लिसन टू हनुमान चालीसा वाइल आई कुक। आई एम ए शेफ, so I cook every day. While I am cooking, I listen to Hanuman Chalisa or my own talks. My own audio talks, about 10,000 I have recorded on several aspects. I keep listening because revision होगा तभी तो मैं कुछ एक दिन बहुत बड़ा स्वामी जी बनूंगा। ठीक है, I am very mindful. Can you observe the fluctuations of your mind without becoming entangled in them? Oh yes, I am pretty good at that. दिमाग काम करते रहता है, दिमाग बंदर है, इधर उधर घूमते रहता है। अरे वो देखो, हे देख, ऐसा करता रहता है, पर मैं देखता रहता हूँ, अबे बंदर चुप रह। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड साधना। हाउ कंसिस्टेंटली डू यू फॉलो योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? मंत्रा चैंटिंग, योगा, सर्विस, सेल्फलेस एक्शन। अरे भाई, जो कुछ भी करता हूँ राम के लिए करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये देख लो आप, यत् करोषि, जो भी करता हूँ कृष्ण के लिए। यत् करोषि यदश्नासि, जो भी खाता हूँ कृष्ण के लिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो भी देता हूँ, जो भी मतलब यज्ञ में, मतलब काम ही, सर्विस ही तो यज्ञ है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. और 1866, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. ये माशुचः. ये एश्योरेंस भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया. नो डूअरशिप, DOER, नो सेंस ऑफ डूअरशिप. D फॉर डूअरशिप, O फॉर ओनरशिप, नो सेंस ऑफ ओनरशिप. E फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स. ये तीनों नहीं है. कुछ भी नहीं है. तो 1866 का मतलब यही है. ठीक है जी. हाउ कंसिस्टेंटली? यस, वेरी वेरी कंसिस्टेंट. Do you feel your practices are purifying your mind, or do you sometimes struggle with distractions and lack of commitment? Yes, so sometimes I'm struggling with distractions and lack of commitment, but 99% my mind is already pure. I am on the highway of Ramakarya. My war name is Ramakarya Dhurandhar. RKD is my war name. Please decide your war name. Actually, Ramakarya Dhurandhar is a description that Hanumanji used for himself in Rama Rahasyopanishad. And I requested Hanumanji to let me use his name, RKD, Ramakarya Dhurandhar. That means one who is eminently capable of carrying out Rama's works. That is my war name. What is your war name? Please work on that. Self-realization. How much wisdom have you gained from sacred teachings, and how much have you integrated into your daily life? Yes, I have gained quite a lot, and I am continuing to gain, because Sanatan Dharma is like an ocean, and I have sipped a few teaspoonfuls. And there is a whole huge ocean. Now I am diving into it and swimming. Most people, I don't know, I am trying to give them 1 teaspoon, they are not able to take it. They are very shallow. And how much have you integrated? Yes, fully integrated. That's why my relatives don't like me. They think that I'm mad. And I have started telling openly to people, मैं पागल हूँ, बच के रहो मेरे से. And my alumni association, school, college, degree, everywhere they have kicked me out, because they think I've become some kind of an extremist. भगा दिया मेरे को सब लोगों ने. मस्त हूँ, खुश हूँ. Do you feel the awareness of your true self as a witness beyond the world? Yeah, always. ये साक्षी भूत है भाई, देख रहा है. राम चला रहे हैं. ये रामलीला कभी पूरा समझ में किसी को भी नहीं आएगा. और राम तो हंसते रहते हैं. ठीक है, स्कोरिंग देख लो. For each question, rate yourself on a scale of 1 to 5. 1 being not at all, 5 being fully. Scores 1 to 2 may indicate areas needing improvement in your spiritual practices. Scores 3 to 4 suggest progress, but there is still room for refinement. Score 5 indicates a high level of purification in that area. I think मैं 3 to 4 में आ गया हूँगा. By using this kind of questionnaire, you can track your progress and gain a clearer understanding of where to focus your efforts on further purifying your inner faculties. So true, isn't it? Would you like to refine or expand on any of these questions for your own use? Oh yes, certainly I'll do that. Jai Shri Ram, I hope you enjoyed it. Please pass it on. Spend some time while you're walking, you can at least listen to this, na? Jai Shri Ram.